Good evening, dear students. Welcome to Matrix DigiLearn, and today we'll discuss about the Microsoft Excel. आम समस्त जानिचे Microsoft Excel कंप्यूटर क्षेत्र रे गोटे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक एंड Microsoft Excel रे बहुत गुडा टेक्निकल क्वेश्चन गुडा को एग्जाम मानक रे आसे तो Microsoft Excel रो सेमती किछि इंपोर्टेंट जिंस हम आज डिस्कशन करिबा। फर्स्ट थिंग ए Microsoft Excel कहले हमें कोन बुझुचे ना Microsoft Excel is a spreadsheet application software from Microsoft company. Microsoft company द्वारा डिजाइन हेतिबा Microsoft Excel टा होची गोटे स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जनरल स्प्रेडशीट को हमें कहीं यूज करू ना स्प्रेडशीट इज a table of values arranged in rows and columns. Each value can have a predefined relationship with other value, and if you change one value in a data range, then its related values will also change. स्प्रेडशीट होची गोटे टेबल भलिया जिंस जोथरे कि आमे अनेक गुडाए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ग्रिड गुडा को पाउ बा अनेक गुडाए स्लीपिंग एवं स्टैंडिंग लाइन गुडा को पाउ। तो से जो स्टैंडिंग एवं स्लीपिंग लाइन गुडा को पड़ी थाए ता द्वारा अनेक गुडाए रो एवं कॉलम तयारी थी माने धाड़ी एवं स्तंभ गुडा को तयारी थाए। ताले सीधा सड़क कहले स्प्रेडशीट होची गोटे जिंस जोथरे कि अनेक गुडाए धाड़ी एवं स्तंभ देखा जाए से जो धाड़ी एवं स्तंभ गुडा को नहीं जहा कि गोटे टेबल रो फीचर बा गोटे टेबल भली हमको देखा जाय थाए। ताले सिंपल थिंग ए जो एक्सेल रे हमें अनेक गुडा कैलकुलेशन कंप्यूटेशन एंड अनेक गुडा ग्राफिकल डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन करू डाटा गुडा कर एनालिसिस करू। तो जनरली एक्सेल को सिंपली गोटे हमें स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बोली कहितो। तो सही एक्सेल को नहीं अनेक गुडा क्वेश्चन हमें आज डिस्कशन करिबा। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? मु ऑलरेडी एबे भी कहूतिली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ता गोटे कोन। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए वेब ब्राउजर, ऑप्शन बी ए वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, ऑप्शन सी ए ग्राफिक डिजाइन टूल, ऑप्शन डी ए स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। ऑलरेडी मोर क्वेश्चन रो आंसर टा कहि भी सारिलेनी तो तथापि भी एनीवन कैन गिव द आंसर। इफ नो इट देन सिंपली चैट इट ऑन योर द ऐप। तम आप रे तमे चैट करो कोटा भितरु राइट आंसर होबो। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। एनीवन? Microsoft Excel. Microsoft Excel is a spreadsheet application. Option D is the right answer. Option D is the right answer. A spreadsheet application. Next question for you. Who invented MS Excel and in which year? Microsoft Excel को किए इन्वेंट करिथिले बा किए ताको हमरो डेवलपमेंट करिथिले एवं को वर्ष? ऑप्शन ए रिचर्ड बोर्डी 1985, स्टीव जॉब्स 1985, बिल गेट्स 1983, गैरी किडॉल 1980. Which option is the right answer? Anyone can give the response. If no, then simply chart it on the screen. Which option is the right answer? Option A, option B, option C या option D? The right answer is option B. स्टीव जॉब्स 1985 मसिया बा 1985 रे ए ऐप टा को डेवलपमेंट करथिले बा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टा को डेवलपमेंट करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, what is the default file extension for an Excel workbook? Excel रो वर्कबुक को हमें गोटे फाइल एक्सटेंशन दे सेट करिबा। सिंपली थिंग हमें जे कोनोसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रे करिबा तो ताको गोटे फाइल कहिथौ बा जे कोनोसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रे हमें काम करिथौ गोटे फाइल जनरेट करिथौ, फाइल तयारी करिथौ। सिंपली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रे भी काम करूचे हमें एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रे जदी काम करूचे सेथरे भी हमें फाइल क्रिएशन करिबा। ताहले से जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रे तयारी होतिबा फाइल टाकू
आमे को एक्सटेंशन बा को सेकेंड नेम देकी सेव करिवा ऑप्शंस आर ऑन योर स्क्रीन ऑप्शन ए .xlsx ऑप्शन बी .xlx ऑप्शन सी .txt ऑप्शन डी .csv which option is the right answer if anyone know it then simply type it on the screen option A option B option C या option D anyone know the answer what is the file extension or what is the second name of Microsoft Excel Microsoft Excel रा second name कौन the right answer is option A .xlsx Microsoft Excel रे आमे जहाँ भी फाइल तैयारी करिबा ताकू .xlsx देकी सेव करिबा सपोज आमे फाइल ना दे देले मैट्रिक्स देन matrix.xlsx देकी आमे सेव करि परिबा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू what is the function is used to calculate the sum of a range of cells very simple question आमे गुटे रेंज ऑफ सेल रो सम को कैलकुलेशन करिबा ताले आमे आ भितर को फंक्शन एक्सेल रो यूज करिबा add ऑप्शन बी सम ऑप्शन सी एवरेज ऑप्शन डी काउंट very simple question this one is very simple question आमे एक्सेल रे जदी कोनोसी रेंज रो समष्टि बाहर करिबा को चाहिबा ताले एमानको भितर को फंक्शन टा यूज करिबा add sum average and count आमे जानि छे जे फंक्शन माने कोन फंक्शन means predefined calculations these are already name or these are already given name for easy use आमे फार्मूला गुडा को मैन्युअली लिखिबा एटा प्लस एटा जहां भी लिखिबा बट एक्सेल रे एमिति गोटे फीचर्स अछि जहा कि प्रीडिफाइंड कैलकुलेशन गुडा को आ पूर्वरु हितिबा कैलकुलेशन गुडा को गोटे नाम दे दिथाय से नाम द्वारा से फार्मूला रा कामटा इजीली ही जाई पारे से गोटा को एक्सेल रे हमें गोटे फंक्शन बोली कहिताउ ताले मोर कहिबा कथा एमानको भितरु को फंक्शन ता गोटे डाटा रेंज रो सम ता कैलकुलेशन करि पारे add ऑप्शन ए ऑप्शन बी सम ऑप्शन सी एवरेज ऑप्शन डी count anyone can give the response if anyone know the answer simply type it on the screen anyone know the answer which answer is the right answer the right answer is option B sum this one is the right answer sum function adds all the numbers in a data range गोटे डाटा रेंज रे थिबा समस्त नंबर गुडा को ऐड करिबा पई सम फंक्शन ही व्यवहार करा जाय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फिल्टर फीचर इन एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रे फिल्टर फीचर को बा फिल्टर को कोन पई यूज करा जाय ऑप्शन ए टू सॉर्ट द डाटा ऑप्शन बी टू डिलीट डाटा option C to display only the data that meets certain criteria and option D to add rows anyone can give the response option A option B option C या option D someone give the answer as option D option D is the wrong answer the right answer is option C to display only the data that meets certain criteria simply आमे गोटे फिल्टर कोचे फिल्टर माने कोन छाणीबा ताले आमे एक्सेल रो डाटा रेंज बा डाटा शीट गुडा को फीड करिचे डाटा गुडा को फीड करिचे आमे गोटे निर्दिष्ट क्राइटेरिया दबा जे मते मन एठी मन को एम्प्लॉय मानक सैलरी गुडा को एंट्री हिची मते पर्टिकुलरली सेई मानकर सैलरीटा देखिबार अछि जो मानकर 20000 रु 30000 भीतर रहउची मते मनकर एक्सेल रे अनेक गुडा डाटा गुडा दिया जाइछि मते पर्टिकुलरली पाइबार अछि ओ माने सीनियर सिटीजन्स अछंती तो एज गुडा जदि अछि मते अबव 60 एज रो देखिबार अछि 60 एज एंड अबव 60 एज ताले सेई जो फीचर्स ता अछि एक्सेल रे जोटा कि पर्टिकुलरली अनेक गुडा एज ग्रुप भितरु 60 एज रो लोकन डाटा मते देई पारिबो
That feature is known as filter. Filter is used to display only the rows or columns that satisfies the conditions you specify. So option C is the right answer, to display only the data that meet certain criteria. किछि criteria basis, किछि conditions basis या हमको data return करी थाई. Okay, next question for you. How do you start a formula in Excel? Excel रे गोटे formula को हमें केमिति start करिबा? Option A, by typing @ option B, by typing hash, option C, by typing plus, option D, by typing equal to. Who can give the response? Who can give the answer? Simply type it. How do you start a formula in Excel? Excel रो गोटे formula को generally केमिति आरंभ करा जाए? Anyone can give the response? The right answer is option D, by typing equal to. All formulas in Excel must be begin with an equal to sign. प्रत्येक फॉर्मूला एक्सेल रो निश्चित भाबे गोटे समान चिन्ह रु आरंभ होबा दरकार. Without equal to sign, the entry is interpreted as regular data, as text or as a number. जदि समान चिन्ह रु सेटा आरंभ होई न थाए without equal to sign, that entry को आमे गोटे सिंपली कहिबा जे गोटे टेक्स्ट एंट्री हिची बा सिंपली गोटे कहिबा जे गोटे नंबर एंट्री हिची. So the option D is the right answer, by typing equal to. समस्त फॉर्मूला बा फंक्शन समान चिन्ह रु आरंभ होबा दरकार निश्चित भाबे. Okay, next question for you. Function is used to count the number of numerical values in a range. Function is used to count the number of numerical values in a range. Options are option A, count, option B, count blank, option C, count if, option D, count a. Numerical values गुडा को calculation करिबा पाई हमरो को फंक्शन को यूज करा जाए? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? Anyone can give the response? Only numerical values. Option B, that is wrong answer. Option A is the right answer. Count. Simply count function रे हमें काउंटिंग करि परिबा. काउंट रो काम होला गणना करिबा. ताले गोटे डाटा रेंज भितरे केतेटा संख्या अछि, that count function counts the numbers. So option A is the right answer. Count function is used. Okay, next question for you. Option 8, the question 8, how do you insert a new worksheet in an Excel workbook? How do you insert a new worksheet in an Excel workbook? The options are A, press Ctrl plus N, option B, right click on a worksheet tab and select insert, option C, right click on the cell and select insert, option D, use the insert tab in the ribbon. आमे एक्सेल रे वर्कबुक रे गोटे वर्कशीट को ऐड करिबा ताहाले हमकु एमानक भितरु को ऑप्शन दे कि जिबाको पड़िबो बा को ऑप्शन ता राइट आंसर हबो? You give the response as option A, Ctrl plus N. This is totally wrong answer. मते करिवार अछि वर्कशीट रो ऐड, मते वर्कबुक रो ऐड करिवार नाही. एक्सेल रो वर्कबुक को होता होची फाइल, बट वर्कशीट माने जेमति आज लाइक वर्ड रे पेज रे काम करू तो सेही भली वर्कशीट ता भी होची गोटे पेज भली जिंस एक्सेल रे. ताले मते वर्कशीट जदी ऐड करिवार अछि, सिंपली मते सेकंड स्टेप देकी जिबागु पड़िबो. राइट क्लिक ऑन द वर्कशीट. सो वर्कशीट रो शीट टैब ऊपर राइट क्लिक करो एंड सिलेक्ट इंसर्ट. इंसर्ट ऊपर क्लिक करो. देखिबो नेक्स्ट गोटे वर्कशीट मोर ऐड हिजबो. एक्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. तो राइट क्लिक ऑन ए वर्कशीट tab and select insert. Okay, next question for you. Is an Excel cell emanako bhitru kota Excel cell? A chart type in Excel, option 1, option B,
a toolbar in Excel. Option C, a type of formula. Option D, an individual box in a worksheet or data entry. Is an Excel cell. Excel cell emanako bitiru koटा? Option A, option B, option C, option D. Which option is the right answer? You type option C and you type option D. The right answer is option D is the right answer. An individual box in a worksheet or data entry. गोटे इंडिविजुअल बॉक्स जो थिरे कि हमें डाटा एंट्री करू. सिंपली थिंक गोटे जनरल जिंस बॉक्स हमें कहा को कहि थाउ. सेल इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रो एंड कॉलम. हमर हमें कहिले जे गोटे वर्कशीट रे अनेक गुडा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ग्रिड्स पड़ी थाए. यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. तो एक्सेल वर्कशीट रे अनेक गुडा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल गार पड़ी थाए. से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल गार गुडा को पड़ीबा द्वारा हमर अनेक गुडा कोठरी तयारी हिते. एंड से जो कोठरी गुडा को ही हमें सेल बोली कहू. ताले से कोठरीटा बा से जो सेलटा गोटे बॉक्स भलिया ही देखा जाए. सो an individual box in a worksheet or data entry. Yes, option D is the right answer. Next question for you. What is an Excel spreadsheet? Excel ro spreadsheet कहले हमें कौन बुझू? Option A, a toolbar for formatting cells, a type of chart in Excel. Option C, a grid of rows and columns for organizing and analyzing data. Option D, a collection of documents. Anyone can give the response. Which option is the right answer? Option A, option B, option C, या option D? Yes, you give the right answer. Option C is the right answer. A grid of rows and columns for organizing data and analyzing data. ताले जो थिरे अनेक ग्रिड माने होची जाली भली देखा जाए. अनेक गुडा रो आ कॉलम थाए. से गार गुडा को पढिबा द्वारा बा जाली गुडा को द्वारा जो थिरे कि हमें डाटा गुडा को एनालिसिस करि पारू एंड ऑर्गेनाइजिंग करि पारू. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. व्हाट इज एन एक्सेल वर्कशीट? एक्सेल वर्कशीट ता कोटा? ऑलरेडी दिस क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. व्हाट इज एन एक्सेल वर्कबुक? वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. व्हाट इज एन एक्सेल वर्कबुक? ऑप्शन ए, a formula for calculations. Option B, a collection of worksheets in a single file. Option C, a type of chart in Excel. Option D, a single sheet in Excel. Excel रो वर्कबुक कहले एग्जैक्टली कौन बुझा जाए? गोटे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? एनीवन कैन गिव द रिस्पांस. Option B. Yeah. Yes. Option B is the right answer. A collection of worksheets in a single file. अनेक गुडा वर्कशीट गुडा को कलेक्शन जहा कि गोटे सिंगल फाइल रे थाए. yes, अनेक गुडा वर्कशीट को लेके तैयारी हे थाए वर्कबुक. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. व्हाट इज एन एक्सेल मैक्रो? एक्सेल रो मैक्रो कोन? ऑप्शन ए, a set of recorded actions to automate tasks. Option B, a function for formatting text. Option C, a type of formula for calculations. Option D, a tool for creating chart. Anyone can give the response. Option A, option B, option C, या option D? Which option is the right answer? Anyone can give the response. What is that macro? You have typed the option B. Option B is the wrong answer. The right answer is option A, a set of recorded actions to automate tasks. Macro, simply think, records a series of actions in a single keystroke. गोटे डिजाइन को बा गोटे फॉर्मेटिंग को आमे वर्कशीट रो अनेक जगह अप्लाई करबा को चाहू छे रिपीटेडली. तो सेथि पई आमे बारंबार से जिंस को करी समय नष्ट करबाटा ठीक नुहे. सेथि पई हमको गोटे ऑप्शन मिली छी मैक्रो. मैक्रो अनेक गुडे एक्शन को सीरीज ऑफ एक्शन को हमें रिकॉर्ड करके रखी थाउ.
जहा कि हमर सेटा रिपीटेडली अप्लाई करके आपे आपे करा जाए गोटे सिंगल की स्ट्रोक माध्यम रे रिकॉर्ड करके रखा जाए से की स्ट्रोक टाको प्रेस कर दला को जहा जहा सीरीज ऑफ एक्शंस थाए सेटा अप्लाई ही जाए सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ए सेट ऑफ रिकॉर्डेड एक्शंस टू ऑटोमेट टास्क्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू व्हाट इज एन एक्सेल ग्राफ एक्सेल रो ग्राफ गोटे कोन ऑप्शन ए टाइप ऑफ वर्कशीट ऑप्शन बी a table of numbers option C a visual representation of data similar to a chart option D a tool for creating formulas which option is the right answer excel ro chart gote kon sorry excel ro graph gote kon you have type option B and you have type option C so the final answer and the right answer is option C a visual representation of data means similar to a chart bele bele kon huye simply think why that graph is used there are many data excel रे हमें अनेक गुडे डाटा एंट्री करिछु बट सेटा गोटे जनरल लोक बुझी परिबो नाही गोटे साधारण लोक बुझी परिबो नाही सो graph is a simple method or graph is a pictorial representation of that data माने को वर्ष अल्ली केते कोन इनकम होला बा को वर्ष केते कोन गोटे माने पॉपुलेशन ग्रोथ होउची ए सब जिंसोडा को लिटरली बा मैनुअली लिखिबाटा होउची बहुत प्रकार माने कंफ्यूज भीतर रही जाय नहीं कि तेनु करी हमें कोन करि थाउ ना ए जो ऑप्शन सी टा होउची राइट आंसर जे ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा सिमिलर टू ए चार्ट एस मु त आंसर टा कहि दोउची तो आंसर तो मैं कहि भी दोउची ऑप्शन सी टा होची राइट आंसर सिंपली थिंक ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा सिमिलर टू ए चार्ट ऑप्शन 15 रो सी टा होची राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू व्हाट इज एन एक्सेल रेंज टा गोटे कोन व्हाट इज एन एक्सेल रेंज माजी जो टॉपिक गुडा नै छी बहुत इंपोर्टेंट जिंस एंड बेसिक थिंग ए जिनसोडा का हमर निहाती क्लियर रहिबा दरकार एडवांस जिनस तो बहुत किछि अछि बट दीज आर द बेसिक थिंग्स व्हाट इज एन एक्सेल रेंज का कोन ऑप्शन ए फॉर्मेटिंग स्टाइल ऑप्शन बी ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वर्कबुक्स ऑप्शन सी ए ग्रुप ऑफ सिलेक्टेड सेल्स इन ए वर्कशीट ऑप्शन डी ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ चार्ट व्हिच ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 व्हिच इज द राइट आंसर What is Excel range? Excel range actually kon? Yes, you have give the right answer. A group of selected cells in a worksheet. गोटे वर्कशीट रो अनेक गुडा सेल रे थिबा डाटा को जदी हमें सिलेक्शन करि दउचे बा नै जाउचे सेटा को गोटे एक्सेल रो रेंज बोली कहै छै डाटा रेंज बोली कहै छै सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ए ग्रुप ऑफ सिलेक्टेड सेल्स इन ए वर्कशीट ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू What is an Excel data table? Excel रो data table कहले कोन बुझा जाय? Option A tool for creating charts. Option B a table that only stores text data. Option C a type of worksheet. Option D a structured range of data used for analysis and calculations. Option A, Option B, Option C या Option D. Which is the right answer? What is an Excel data table? Excel रो data table कहले हमें कोन बुझू? You have give the answer as option D. Yes, option D is the right answer. A structured range for data used for analysis and calculations. सही range टाको हमें नौचे बा सही जो डाटा रेंज टाको नौचे जोटा कि हमें एनालिसिस करि परिबा एंड ताको नै किछि कैलकुलेशन करि परिबा सेटा होछि एक्सेल रो एक्चुअली गोटे डाटा टेबल बोली कहन Option D is the right answer. Next question for you. Which function is used to calculate the average in a range of cells? Very simple question. Which function is used to calculate the average in a range of cells? Option A, sum. Option B, max. Option D, average. Option D, count. Yes, you have give the right answer. Average function ही average पे यूज करा जाए. So option C is the right answer.
Next question for you. Which shortcut key is used to save an Excel workbook? This is very easy question. Yes, you have given the right answer. Option A is the right answer. Okay, next question for you. What does the B lookup function do? This is very important question. What does the B lookup function do? Options are A, deletes the row. Option B, searches for data in columns. Option C, searches for data in rows. Option D, calculates a vertical sum. Which option is the right answer? What does the B lookup functions do? B lookup. That exactly come on. Anyone can give the response? Option A, option B, option C, या option D. B lookup कहीं यूज करा जाए? B lookup is, you have give the right answer. The option B is the right answer. Searches for data in columns vertically. B lookup means vertically lookup. ताले vertically कोटा को हमें कहते हो. Vertically माने जोटा हमारा standing टा को कहते हो vertically and sleeping टा को कहते हो horizontally. ताला B lookup रा कामो बा vertical lookup रा कामो किछि conditions basis किछि short basis हमारा से column range रो डाटा हमको extract देता है बा column range रो हमको डाटा देता है. So option B is the right answer. Searches for the data in columns. Option B is the right answer. Next question for you. How do you change the background color of a cell in Excel? How do you change the background color of a cell in Excel? Excel रे हमें गोटे background color को change करिबा. So what are the options? The first option is press Ctrl plus B. Option B, use the fill color button in the ribbon. Option C, right click and select background color. And last option is use the font color button. Which option is the right answer? Which option is used to change the background color of a cell in Excel? Anyone can give the response? You have give the response as option C. Wrong answer. Simply आमको जिबागु पड़िबो fill color जोटा कि रिबन भीतर हमर अछि से fill color धेरे ही क्लिक कर देले select range को नै कि सेल रो से बैकग्राउंड कलर हमर चेंज हे जिवो. तो एथिर बैकग्राउंड कलर बोली सेंति किछ ओटा ऑप्शन न थाए. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. fill color को जाई कि हमें रिबन में जोटा मिले सेठी जाई कि गोटे सेल रो बैकग्राउंड कलर को चेंज कर दे परिबा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. Where is the goal seek? Excel रो गोटे गोल सीक अछि. गोल सीक रो काम हम कहि दोछि. Goal seek adjust a value in a specified cell until a formula dependent on that cell reaches at the target value. आमे गोटे सम रेंज रे मिश्रण फल बाहर करिछे. आमे चाहू जे से जो मिश्रण फल रो रिजल्ट भी चेंज हे जाऊ हमर गोटे वैल्यू को चेंज करिवा सहित गोल सीक. तो से गोल सीक जो जिंसोटी हमर एक्सेल रो अछि गोटे इंपोर्टेंट जिंसो सेटा को जगह एक्चुअली अछि. ऑप्शन ए इन द डाटा टैब. ऑप्शन बी इन द इंसर्ट टैब. ऑप्शन सी इन द फॉर्मूला टैब and option D in the home tab. A goal seek टा कोठी अछि. You have give response as option D and option A is जे option A आंसर दैचंती that is right answer. सेटा एक्चुअली हमर डाटा टैब भितरे थाए. डाटा टूल्स भितरे थाए. डाटा टूल्स भितरे जो व्हाट इफ एनालिसिस से व्हाट इफ एनालिसिस भितरे गोल सीक ही थाए. गोल सीक very important feature of Microsoft Excel. So option A is the right answer in the data tab. Okay, next question for you. How are cells named in Microsoft Excel? MS Excel बा Microsoft Excel रे सेल गुडा को केमिति नेमिंग ही थाए. Option A by using a formula. Option B by columns letter only.
Option C, by combining column letter and row number. Option D, by row number only. Anyone can give the response? Excel ro cell गुड़ाक naming केमती हिताए? Anyone can give the response? Yes. Option C is the right answer. By combining column letter and row number. आमे कहिले जे cell is the intersection point of row and column. रो एवं कॉलम परस्पर को जोटी इंटरसेक्ट करंती छेद करंती सेठी गोटे गोटे सेल हुए आमे जानि छे एक्सेल रे हमर रो गुडा को 1 2 3 फॉर्मेट रे नेमिंग हेता एंड सेटा 10,48,576 पर्यंत नंबरिंग हेता 10,48,576 rows in each worksheet window and 16,384 columns 16,384 टा कॉलम था एंड कॉलम गुडा को ABCD format naming है A to Z, then AA to AZ, sorry AA to ZZ, then triple A to XFD. तो ए भली पद्धति रे सेल गुडा को हम 16,384 टा कॉलम पाउ जहां भी हो ए कॉलम एवं वन रो परस्पर को जोटी इंटरसेक्ट करंती से सेल रो ना हुए A1. So option C is the right answer. By combining column letter and row number, cell is named in Excel. Option C is the right answer. Next question for you. How do you merge two or more cells in Excel? How do you merge two or more cells in Excel? Option A, use the sum function. Option B, click merge and center in the home tab. Option C, use Ctrl plus M. Option D, right click and select merge. Which option is the right answer? Option A, option B, option C, या option D. How do you merge two or more cells in Excel? Yes, you have give the right response. That is, click on merge and center in the home tab. Home tab ro alignment group भितरे हमर merge and center थाए. सेठी जदि हमें क्लिक करि दोचे no option B is the right answer. Option B is the right answer. Click merge and center in home tab. Home tab रो alignment group भितरे merge and center थाए. जो रेंज ऑफ सेल को मिसई कि हमें गोटे सेल करिबा को चाहूथिबा से रेंज टा को आगे सिलेक्शन करिबा एंड अलाइनमेंट होम टैब रो अलाइनमेंट ग्रुप रो मर्ज एंड सेंटर रे मारी देले से सेल टा मर्ज हो जिवो एंड टेक्स्ट टा सेल रो मझी को पळे आसीबो. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. व्हाट इज एन एक्सेल टेम्पलेट? Excel template. Option A pre-designed spreadsheet for a specific task, a set of formulas. C, a collection of charts. Option D, a tool for analyzing data. What is an Excel template? Anyone can give the response. What is an Excel template? Yes. Option A is the right answer. Yes, again you type the answer. Yes, A is the right answer. A pre-designed spreadsheet for a specific task. आमे जतले एक्सेल रो वर्कशीट तैयार करू पूर्वरो तार डिफाइनिंग एकी बा डिजाइनिंग एकी स्टाइल गुडा कथाए से टेम्पलेट भितरो एक्सेल रो शीट रो डिजाइन ता केमिति आमे नबा सेटा चूज कर देले सेही प्रकार हम वर्कशीट ता हम पाई मिली जाय. सो ऑप्शन A is the right answer. A pre-designed spreadsheet for a specific task. Okay, next question for you. What does the freeze panes feature do? What does the freeze panes feature do? Option A, changes the font style. Option B, locks specific rows and columns in a place. Option C, hides the ribbon. Option D, deletes unwanted data. What does the freeze panes feature do? Anyone can give the response. Option A, option B, option C, या option D. Which is the right answer? freeze panes feature करे कौन? Anyone can give the response. Yes, option B is the right answer.
locks specific rows and columns in a place. Specific row गुड़ाक बा निर्दिष्ट रो गुड़ाक जोड़ाक मु लुचेई दबा को चाहूथिबी हाइडिंग करबा को चाहूथिबी लुचेई देबी बेले बेले सिंपली थिंग तार यूज प्रैक्टिकली केमते करा जाय बेले बेले मनकर रो हेडिंग अछि सीरियल नंबर नेम्स ग्रेड डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन सैलरी एई भरी मु चाहूनी जे हेडिंग टाकू लुचेइबा पई हेडिंग ता सेमती रहू बा हेडिंग टाकू स्क्रॉलिंग करबा पई किंतु मोर तळकू मनकर अनेक गुडा डाटा एंट्री अछि हेडिंग कांस्टेंटली थिबो एंड डाटा गुडा को मु स्क्रॉल करके देखि परिबी सो फ्रीज पेन्स रो काम वाला आइदर रो रे हो बा कॉलम रे हो ताको लॉक करि दिए सेटा कांस्टेंटली रहे सेटा स्क्रॉलिंग होय नै बट रिमेनिंग रोज स्क्रॉलिंग ही थाए सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू हाउ डू यू अप्लाई ए फॉर्मूला टू ऑल सेल्स इन कॉलम हाउ डू यू अप्लाई ए फॉर्मूला to all cells in column. Option A, use Ctrl plus F. Option B, copy and paste. Option C, right click and select apply formula. Option D, drag the fill handle down. How do you apply a formula to all cells in a column? Which option is the right answer? Anyone can give the response? Option C, this is wrong answer. Option D is the right answer. No, option C is also wrong answer. Option B is also wrong answer. Option D is the right answer. Drag the fill handle down. Suppose मो एठी एक्सेल रो वर्कशीट रे कैलकुलेशन करिछि एंड ए सेल रे थिबा जो फार्मूला टा मो चाहूछि ए रेंज ऑफ सेल समस्त पई अप्लाई हेबो सिंपली तारो तळ को जो आसला पर ओडे स्मॉल ब्लैक प्लस साइन आसीओ जोटा ऑटो फिल हैंडल कोचे से ऑटो फिल हैंडल टाको ड्रैग करि आनिबा एंड सबु तक फार्मूला से रेंज रे कॉपी हि जिवो माने सबु सेल पई से समान फार्मूला टा कैलकुलेशन होबो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ड्रैग द फिल हैंडल डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू हाउ डू यू हाइड ए रो इन एक्सेल हाउ डू यू हाइड ए रो इन एक्सेल ऑप्शन ए right click the row number and select hide. Option B, right click on the worksheet tab and select hide row. Option C, press Ctrl plus H. And option D, use the home tab in ribbon. आमे एक्सेल रो गोटे रो को हाइडिंग करिवार अछि तो आमे एटा को ऑप्शन को यूज करिबा Anyone can give the response? Option A, option B, option C, या option D. Which option is the right answer? Option C, option A. Yes, option A is the right answer. Right click the row number. Row number जो रो हेडर थिबो तापर राइट क्लिक करिवो जो रोटा के हम हाइडिंग करियो चाहथिबो एंड सेठी सब पळे आस्थबो इंसर्ट डिलीट इन सब पळे आस्थबो सेठी थिबो ओटा हाइड मारी दबो से रोटा हाइडिंग हि जिवो लुचि जिवो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू क्वेश्चन नंबर 29 व्हाट इज एन एक्सेल चार्ट एक्सेल रो चार्ट ता ओटे कोन ए टूल फॉर क्रिएटिंग फॉर्मूलाज ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा a table of data and option D a type of worksheet what is an excel chart option A tool for creating formulas option B a visual representation of data option C a table of data option D a type of worksheet कोटा ठीक आंसर इबानक भितरु क्वेश्चन नंबर 29 which is the right answer Yes, option B is the right answer. A visual representation of data. आमे गोटे डाटा को जनरली बुझीबा कोले सेटा लिखा जाइथिबो मने करो एपटे फूड ग्रेन नेम्स ता पाखु को मन कर लिखा आइछि प्रोडक्शन इन क्वांटिटी बा क्वांटिटी केते प्रोडक्शन आइछि को वर्ष ताको गोटे चित्र माध्यम रे हमें देखाइ देबा से चित्र माध्यम जो जिनसला देखा जाय ताको गोटे एक्सेल रो चार्ट बोली कहंती सो ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज द राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर Option B is the right answer, a visual representation of data. Okay, next question for you.
What is an Excel ribbon? What is the Excel ribbon? Option A specific sheet in a workbook, a self-formatting option, a type of formula. Option D, a bar at top of Excel window that contains various tools and commands. A specific sheet in workbook, a self-formatting option, a type of formula, a bar at top of Excel window that contains various tools and commands. What is Excel ribbon? Anyone can give the response? Yes, option D is the right answer. A bar at top of Excel window that contains various tools and commands. Excel ro application ऊपर गोटे बार थाए जोटा कि टैब तळगु थाए हमरो भ्यारिस जो टैब गुडा थाए ता तळगु थाए सेठी अनेक गुडाए ऑप्शन गुडा का टूल्स गुडा का थाए सेही जो इंटरफेस को हम रिबन बोली कहू. Option D is the right answer. Next question for you. What is an Excel dashboard? Excel dashboard कौन? Option A tool for editing cell data. Option B, a collection of charts and tables to visualize data in one view. Option C, a type of Excel formula. Option D, a way to organize worksheet. Which option is the right answer? Question number 31. Which is the right answer? What is Excel dashboard? Option A, option B, option C, option D. Which is the right answer? Excel dashboard कौन? Anyone can give the response? The right answer is a collection of charts and tables to visualize data in one view. आमे एका थरे के जो टेबल ऑफ डाटा थिबो एंड चार्ट थिबो गोटाई जगह रे देखिया को चाहिबा तो एक्सेल रो that is known as the Excel dashboard, a collection of charts and tables to visualize data in one view. गोटे व्यू रे हमें देखि परिबा. So option B is the right answer. Next question for you. What is the Excel formula for calculating percentage? What is the Excel formula for calculating percentage? Option A equal to A1 asterisk 100 by B1. Option B equal to A1 by B1. Option C equal to A1 asterisk B1. Option D equal to A1 plus B1. Which option is the right answer? Very simple question this one. What is the Excel formula for calculating the percentage? The right answer is option A equal to A1 into 100 divided by B1. Okay, next question for you. How can you quickly select an entire column in Excel? How can you quickly select an entire column in Excel? Option A, press Alt plus C. Option B, press Ctrl plus C. Option C, click on the column header. Option D, double click any cell in the column. Which option is the right answer? How can you quickly select an entire column in Excel? Option C, option D, सबोतिक आंसर. Actually जे option C कहले सेटा होची ठीक. Click on the column header. Simply column header रे जदि हमें क्लिक करि दोचे ताहले क्विकली से कॉलम ता सिलेक्शन हे जिवो. जे कोन से कॉलम हो ता कॉलम हेडर रे हमको सिंपली क्लिक कर दबार अछि. The entire column ता सिलेक्शन हे जिवो. Option C is the right answer. Next question for you. Which Excel function is used to join two or more text strings? Which Excel function is used to join two or more strings? दुई बा तदुर्ध स्ट्रिंग को बा कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को जॉइनिंग करिबा पई को फंक्शन को यूज करा जाय. ऑप्शन ए टेक्स्ट जॉइन. ऑप्शन बी concatenate. Option C merge. Option D join. Anyone can give the response? Which Excel function is used to join two or more text strings?
Anyone can give the response? Option B is the right answer. Concatenate. Concatenate is used to join two or more strings. मनेकर गोटे जगह लिखा हिची हमर मैट्रिक्स आ गोटे जगह लिखा हिची डिजिलर्न मु चाहूची मैट्रिक्स डिजिलर्न टाको मिसई की गोटे जगह को आनिया पाई ताहले मते कॉन्केटनेट फंक्शन रे से जो दीटा जाक सेल रे अछि डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट पके दबा को पड़िबो जहां पर से दीटा जाक टेक्स्ट स्ट्रिंग मिसी की गोटे सेल रे पळे आसीबो concatenate that function joins two or more strings. Okay, next question for you. Which type of chart is best for showing trends over time in Excel? Which type of chart is best for showing trends over time in Excel? Option A, scatter chart. Option B, bar chart. Option C, line chart. And option D, pie chart. Which option is the right answer? Which type of chart is the best for showing time trends over time in Excel? Anyone can give the response? को चार्ट को हमर व्यवहार करा जाए टाइम रो ट्रेंड को देखिबा पाई ऑप्शन डी आई थिंक रॉन्ग आंसर ऑप्शन डी जो कहला पाई चार्ट सेटा परसेंटेज बेसिस जिंस देखा जाए जदि राउंडिंग ता जदि 100% होउची एंड कोटा केते परसेंटेज ता भितरे पडिवो दैट इज पाई चार्ट इज मच मोर सुइटेबल बट मो पछे टाइम ट्रेंड पाई कोटा बेस्ट हबो द राइट आंसर इज टाइम ट्रेंड पाई लाइन चार्ट होची सुइटेबल लाइन पडिथिबो एंड से लाइन रो जणा पडि जिवो जे एटा होची माने एटा इति वर्ष बढ़िला सेटा सेति वर्ष पुनी कमिला से वर्ष पुनी इति की बढ़ी गला तो लाइन चार्ट is the best for the time trend. Option C is the right answer. Next question for you. What does the trim function do? Excel trim function कौन करे? Option A, converts text to uppercase and removes spaces in between words. Option B, removes spaces from the text except single spaces between words. Option C, rounds a number to a specific decimal. Option D, finds the length of text in a text string. What does the trim function do? Anyone can give the response? Option A, option B, option C, yeah, option D. Which is the right answer? The right answer is option B, remove spaces from the text except a single spaces between words. Single space गुडा नुह बट जो अधिक अधिक स्पेस किछि पड़ी जाइथिबो ट्रिम फंक्शन रे से स्पेस गुडा को हमें काटि देई परिबा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू हाउ कैन यू कंबाइन डाटा फ्रॉम मल्टीपल शीट्स इनटू वन इन एक्सेल हाउ कैन यू कंबाइन डाटा फ्रॉम मल्टीपल शीट्स इनटू वन इन एक्सेल Option A, by copying and pasting. By option B, by using VLOOKUP. Option C, by using class fill. Option D, by using consolidate. Which option is the right answer? How can you combine? Combine means मिसेइबा. अलगा अलगा वर्कशीट रे थिबा डाटा गुडा को मिसेइ के गोटे वर्कशीट को हमें आनिबा बा गोटे वर्कशीट करिबा ताहले एमानको भितरु कोटा बेस्ट थिंग होबो ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी you give the response as option D that is option C that is wrong answer option C wrong answer option D is the right answer yes option D is the right answer by using consolidate ro kama wala that combines data from different worksheets into a single worksheet अलग अलग वर्कशीट रे डाटा थिबो माने को 2025 2026 सॉरी 2024 2025 2023 तीनटा जका डाटा को समरी बाहर करिया को चाहूची एई वर्ष रे 2025 रे ताले सेटा कंसोलिडेट द्वारा मो शीट 1 शीट 2 शीट 3 डाटा डो नै गोटे जगह रे रिप्रेजेंट कर दे परिबी कंसोलिडेट द्वारा सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू व्हाट डज द नाउ फंक्शन रिटर्न
What does the now function return? Option A specific time step, the current date only. Option C, the current date and time. Option D, the current time only. Which option is the right answer? What does the now function return? Now function. Question number 38. What is return? Anyone can give the response? Option C. Yes. Option C is the right answer. The current date and the time. वर्तमान समय केते हिची आउ आजिर तारीख केते नाउ फंक्शन रे एग्जैक्टली सही जिनसडा रिटर्न करि थाए. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. हाउ डू यू रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज इन ए रेंज? हाउ डू यू रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज इन ए रेंज? ऑप्शन ए, डिलीट मैन्युअली. ऑप्शन बी, यूज डाटा टैब. ऑप्शन सी, यूज सॉर्ट. ऑप्शन डी, यूज फिल्टर. How do you remove duplicate values in a range? Anyone can give the response? Option D, use filter. Anyone? Option D is the wrong answer. Option A, that is also wrong answer. तमे जो D आउ A कहउछ से दुटा जाक ही भूल हैला. एंड ऑप्शन बी टा होची राइट आंसर, यूज डाटा टैब. आमे जेतला डाटा टैब को जिबा ता धेर गोटे ऑप्शन अछि रिमूव डुप्लीकेट्स. से जो हां, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. रिमूव डुप्लीकेट्स जदी आमे मारी दोउछे तो रिमूव डुप्लीकेट्स डाटा टैब भीतर अछि. से जदी डाटा रेंज रे कोनोसी डाटा रिपीटेडली एंट्री जाय थाए से रिपीटेडली डाटा रा कटि जिवो रिमूव डुप्लीकेट्स रे. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. व्हाट इज द पर्पस ऑफ एच लुकअप फंक्शन? व्हाट इज the purpose of H lookup function? Option A, to search for data in columns. Option B, to search for data in rows. Option C, to create horizontal tables. Option D, to sort horizontal data. What is the purpose of H lookup? Option C, to horizontal tables. S, to create horizontal tables. No, that is not wrong answer. Option A, that is also wrong answer. The right answer is to search for data in rows. Row wise data को sorting करिबा पई हमरो यूज करा जे एच लुकअप को. कॉलम वाइज सॉर्टिंग करिया पई यूज करा जे वी लुकअप को. सो हमें सर्च करिबा जदी रो वाइज हॉरिजॉन्टली ताले एच लुकअप. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. हाउ कैन यू फ्रीज द टॉप रो इन एक्सेल? हाउ कैन यू फ्रीज द टॉप रो इन एक्सेल? ऑप्शन ए, व्यू, फ्रीज पेंस, फ्रीज टॉप रो. ऑप्शन बी, व्यू, स्प्लिट top row. Option C, insert, freeze top row. Option D, data freeze panes. Which option is the right answer? Option A is the right answer. हमें view को जिबा, view tab को जिबा, freeze panes को जिबा and freeze top row. So option A is the right answer. Next question for you. Which function is used to find the largest value in a range? Which function is used to find the largest value in a range? Options are: option A, maximum. Option B, maxima. Option C, max. Option D, large. Which option is the right answer? Option A, option B, option C, या option D? Which function is used to find the largest value in a data range? You give the response as option A. Wrong answer. Option B, that is also wrong answer. Option C is the right answer. Max function. Maximum बोली किसी Excel वाले function नहीं कि maxima बोली किसी वाले function नहीं. Max बोली वाले function अच्छी that returns
the largest value in a data range ভিতরে সবুঠাରୁ বড় ভ্যালুটা কেতে পাইবা পাই max function को यूज करा जाए so option C is the right answer next question for you which feature allows you to summarize data in excel which feature allows you to summarize data in excel option A goal seek option B conditional formatting option C pivot table option D data validation which feature allows you to summarize data in excel anyone can give the response option D data validation option B conditional formatting both are the wrong answer option D नुहे कि option B नुहे option C is the right answer pivot table is an interactive table that lets you analyze large size of data when you want to do sorting totaling or comparing related items you can use the pivot table reports आमे जेतेबेले बहुत गुडे डाटा थिबो आमे कोन करिबाकू चाहूतिबा ताको एनालिसिस करिबाकू चाहूतिबा तार डिफरेंट समरी बाहर करिबाकू चाहूतिबा ताको टोटलिंग करिबाकू चाहूतिबा सेतेबेले आम पई की बेस्ट फीचर होची पाइवट टेबल आमे आम अनुसार रो को कन्वर्ट को करि परिबा कॉलम रो डाटा को रो को डिफरेंट समरी गुडा का पाइबा पई so pivot table option C is the right answer option C is the right answer pivot table next question for you what does the if function do what does the if function do format cells performs logical tests finds average values sorts data anyone can give the response what does the if function do you give the response as option C find average values wrong answer the right answer is performs logical values if returns true in a data range if a condition evaluates to true and skip that values if the condition evaluates to false সেই ভ্যালু গুডা কিছু ছাড়ি দেব जोटा कंडीशन अनुसार फॉल्स बोली प्रमाणित हो बा भूल बोली प्रमाणित हो এবং সেই कंडीशन रे বা সেই স্টেটমেন্ট টাকু এক্সিকিউট করিবা বা কাম করিবো जोटा कंडीशन अनुसार ट्रू बा सत्य बोली प्रमाणित हो सो परफॉर्म्स लॉजिकल टेस्ट ए जो पहले ट्रू बा फॉल्स এটা लॉजिकल ऑपरेशन कहती तो परफॉर्म्स लॉजिकल टेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू how do you apply a predefined style to cells in excel how do you apply a predefined style to cells in excel which option is the right answer anyone can give the right answer option A right click the cell and select style option B press ctrl plus alt plus s use the styles group in home tab click insert and style anyone can give the response quickly time is very short we have to complete the rest answers option C is the right answer use the styles group in the home tab re jo styles no option C is the right answer this one is the right answer next question for you what does excel function sum if this one returns question number 46 which is the right answer option C is the right answer adds only values greater than 10 from the range A1 to A10 adds only the values greater than 10 from range A1 to A10 a condition re se sei range ro sum if ta bahar kari paribo yes option C is the right answer next question for you how can you sort data in excel ro data guda ka me sorting kariba pai which option is the right answer which option is the right answer option A is the right answer use the sort option in the data tab next question for you what happens when you press ctrl plus T in excel ctrl plus T को press कले कौन हुए anyone can give the response option B is the right answer converts a range of cells into a table जदि तमे कंट्रोल सहित टी को प्रेस करूछ जो डाटा रेंज ता सिलेक्शन करिछ सेटा
तारो गोटे टेबल से तैयारी कर दबो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू in excel how do you reference a cell another worksheet in same workbook excel रे केमती आमे एटा करि थाउ रेफरेंस रे केमती नै थाउ option D is the right answer equal to sheet but exclamation mark A1 this one is the right answer and the last question for you in excel how can you prevent a formula from changing when you copy it to another cell in excel how can you prevent a formula from changing when you copy it into another cell that reference is known as absolute cell reference absolute cell reference रे हमें formula जतले copy करिबा गोटे cell रो आ गोटे cell को से changing होबो नाही constantly रहिबो so option C is the right answer option C is the right answer option C is the right answer okay thank you for joining this class and next class I will bring some important questions of the computer okay thank you for joining this class thank you